Okay, so uh, see, financial data can be very difficult to model using multiple regression, right? It can be very difficult to model using multiple regression. So what we use is we use another family of models called time series models, right? And we have three of such models in our curriculum. So first is your linear trend model, right? Okay, so please note this down, ध्यान से लिखना. Here the dependent variable has a linear relationship with time. So now your model looks something like this. Your independent variable is your time here. B01 plus B0 plus B1 T plus E equals 1. So your independent variable is time. Thus the name time series model, right? So guys, you would have technical analysis. तुम लोग को मालूम है? Technical charts, guys, on हाँ the. मतलब So you have on those charts, if you would notice, you have time on the x-axis and हम्म, stock price on the y-axis. हाँ, So you use all these time series models to model or forecast stock prices, right? So this is your linear trend model, right? So how am I going to interpret beta naught and beta 1? So beta naught is the value of y at time 0, and beta 1 is basically it is the change in y due to change in time, right? Simple है. On the y axis you are going to have your y variable is going to be stock price, and your basically dependent variable y is going to be stock price, and x is going to be time. So day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So you regress the two, you will get an equation like this, right? ठीक है guys, do you want to see this in excel कि clear है? स्टॉक प्राइस y है, टाइम x है. इसको एक्सेल में दिखाना पड़ेगा कि क्लियर है? बोलो गाइस, दिखा देता हूँ. दिखाऊं एक्सेल में कि ठीक है? कोई कुछ बोलता ही नहीं. जैसे आप बोलो दिखा दो। तो यहाँ पे डेज हैं, तो 20 दिन का डेटा ले लेते हैं, 22 दिन का. और so this is my time, and then this is stock price, and okay. So what we do is basically we run a regression, data analysis, regression. Y range is going to be the stock price,
and x range is going to be time, right? You're going to run a regression on this, output यहाँ कर, right? So the equation is something like this: 104.50 plus 0.09 into x, right? Uh, so my forecasted stock prices is, okay. So see, since I modeled it using random numbers, right? That is going to be a problem. But the basic idea is it's going to look something like this: 104.50 plus beta 1 into time, right? So these are my stock prices, and I can use this to predict the stock price on the 23rd day. See, I made a mistake by using random numbers here. I should have used normal numbers, right? But for getting hurrying things up, right? So my model is something like this: 104.50 plus 0. Y equals 104.50 plus 0.09 t, right? So as per this model, stock price at day 24 should be 104.50 plus 0.09 into 24, whatever the value you pick, right? So this is your linear trend model, right? The independent variable is time, and the dependent variable has a linear relationship with time. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है गाइस? कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े? किसी को Yes, कोई sir. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? महक एंड ऐश्वर्य, No, sir. No, sir. अब है एक लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल, इसको ध्यान से लिखना: लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल. सो यू नो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. तो कोई भी अगर तुमको टाइम सीरीज दिखे ना जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ऐसा, इसमें अगर लीनियर रिग्रेशन लर्न करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसा होगा. तो क्या लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही प्रिडिक्शन? विल इट मेक द राइट प्रिडिक्शंस guys? If my data is growing exponentially and I use simple linear regression and draw the line of best fit, will the line of best fit predict the future correctly? No, sir. No, है ना? तो ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. तो वहां पे अगर ऐसा टाइम सीरीज है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है, तब हम लोगों को लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल यूज करना पड़ेगा. डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. यहाँ पे ये सब सिंपल लीनियर ट्रेंड मॉडल यूज नहीं कर सकते. अगर डेटा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो लीनियर ट्रेंड मॉडल नहीं यूज करना, लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल यूज हो.
तो ये क्या होता है देखो, see this model is of this type: y equals e to the power b0 plus b1x, right? Now what you do is you multiply both sides with the natural log ln. Ln of y equals ln of e to the power b0 plus b1x. So this will become b0 plus b1, right? Okay. So understand this. This is a log linear model. This side is log. This side is linear. Um, thus the name log linear, right? And see, if you know when the data grows exponentially and you run a simple linear regression on it, you'll see a lot of errors in that, right? In fact, you know, if you run a simple linear regression on this time series, you will see a lot of positive serial correlation in your error terms. But but this is for some other day. बट इतना तो क्लियर है ना कि एक्सपोनेंशियल डेटा पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन करेंगे तो फोरकास्ट सब बर्बाद होगा, ये तो समझ आ रहा है ना सबको? हम्म, गाइस? Yes, sir. Okay, so what we do is to correct this, we take a natural log of y and then run a linear regression using OLS. मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। मैं कोई ना एक एक्सेल में ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बना देता हूँ एक, ठीक है? तो यहाँ मेरा टाइम आ जाता है, और यहाँ पे मैं तुम लोगों को कोई भी एक तो अगर इसको अपने स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करेंगे ना तो देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो बहुत ज़्यादा ही वो बना दिया मैंने। हाँ, तो ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सो दिस इज माय वाई, दिस इज टाइम, विच इज एक्स। ये वाई को तुम सेल समझ लो, स्टॉक प्राइस समझ लो, कोई कोई स्टॉक्स भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। राइट नाउ इफ आई रन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस, तो देखो कैसा लगेगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस पे रन करके देखो। So this is my y, this is my time, और आउटपुट को यहाँ दिखा। शिट शिट शिट। This is my time x, and let's show the output somewhere here, ठीक है ना? तो मेरा ये रिग्रेशन आउटपुट आ गया। तो मेरा कोएफिशिएंट इंटरसेप्ट है -79.93 और स्लोप है 17.26। मेरा फोरकास्टेड y क्या होगा? Forecasted y is
this, you freeze it, plus this. Again, I'm going to freeze this into time. अब देखो एरर्स कितना है, अब देखते हैं एरर्स निकालते हैं. I'm going to zoom this for you. तुमको दिख रहा है पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है, पॉजिटिव एरर्स फॉलोड बाय पॉजिटिव एरर्स एंड नेगेटिव एरर्स फॉलोड बाय नेगेटिव एरर्स, ये दिख रहा है. Then you have this positive error here followed by positive error. So this is positive serial correlation. Positive errors followed by positive errors and negative errors followed by negative errors. Now if I were to draw the line of best fit on this chart, वो कैसा लगेगा देखो. So on X you take time, right? And on Y, what you do is you take these forecasts. Okay. ये देखो ये मेरा ऑरेंज लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, एकदम बर्बाद है ना guys? So I can't use a Yes. linear trend model when your um, time series is exponential. So what I have to do is I have to use a log linear trend model. तो अब हम लोग क्या करेंगे? So I'm just going to copy this sheet. So create a copy. ये सबको मैं delete कर रहा हूँ. Right? I'm going to delete all this also. काम का नहीं है. Now what you do is ये y है ना, you take the natural log of y. See the ln of, now you've taken this. Now you are going to run a regression where the natural log of y is the dependent variable and your time is independent. Right, now run a regression on. So data analysis, regression. Again I'm x range तो मेरा ठीक ही है, y range को change. Okay, and output range को okay. ये मेरा regression आ गया, ठीक है. 1.98. Okay, now I'm going to forecasted value यहाँ करते हैं, forecasted y with this new regression. सर ये LNY फोरकास्ट हुआ है ना? हाँ forecasted ln. अब तुम इसका वो लोगे, इसको कन्वर्ट करोगे
देखोगे that your errors have reduced significantly, है ना। अब तुम ये y और ये को कंपेयर करो, अब कम हो गया ना, देख रहे हो। कैन यू सी दिस गाइस? हम्म, कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि पहले कितना एरर था और अब कितना एरर है। पहले देखो ये इतना इतना बड़ा बड़ा एरर्स था, अब कितना छोटा छोटा एरर्स रह गया। आर यू गेटिंग द आइडिया गाइस? सो इफ एरर्स आर लो, द मॉडल इज गुड। एनी डाउट्स प्लीज बोलो। No doubt. No, sir. So this is the idea when you have some time series that grows exponentially. You don't use a linear trend model, you use a log linear trend. Then you have this. क्लियर है ना, कोई पॉइंट प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, No problem. फिर है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इस बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे टाइम नहीं है। हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is a lagged version of the dependent variable. So we are basically regressing the dependent variable on past values of itself or on prior values of itself, right? We are regressing the dependent variable on prior values of itself. तो ये कैसा लगेगा? अब यहाँ y नहीं आएगा। अब ये मॉडल है क्या? एक्स टी इक्वल्स बी जीरो प्लस बी वन एक्स टी माइनस वन प्लस बी टू एक्स टू माइनस टू प्लस some error term. So how am I going to interpret this? Say this x is a time series of stock prices. So what we are trying to do is we are trying to predict the price of the stock today using price of the stock yesterday and day before yesterday, right? We are trying to predict the stock price today. We are trying to predict the stock price today using the stock price using yesterday's stock price and day before yesterday's stock price, right? So this is known as an AR model. The independent variable is a lagged version of the dependent variable. So this is known as an AR1 model. Why one? बोलो बोलो यार guys. Why is There's it only in here? one lag Why is it in here? variable. Because we are using yesterday's stock price to predict today's stock price. So there is uh, only one lag, right? We are using the first lag of the dependent variable as the independent, right? Now this is an AR2 model, right? Because we are using the first and the second lag of the dependent variable as the independent variable, right? So you can have as many lags as possible. So this is an AR2. So this one AR1, this two, um, this is known as the uh, order of the model, right? So if you are using only one lag, the AR model has an order of 1. If you are using 2 lags, the AR model has an order of 2, right? And you can use as many lag variables as well, right? Okay. Guys, अभी तक सब क्लियर है? Guys बोलो कोई प्रॉब्लम है?
सो इफ डेटा शोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या यूज करोगे? लॉग लीनियर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए आर मॉडल सिर्फ तुम स्टेशनरी टाइम सीरीज पे यूज कर सकते हो। So variance stationary ना, हाँ, variance stationary ना, क्या कह रहे हैं? variance should be stationary. कोवेरियंस, इसमें बहुत चीज है, मैं सब बता दे रहा हूँ। कोवेरियंस स्टेशनरी या स्टेशनरी एक ही बात होता है वैसे, राइट? यू कैन यूज अ ए आर मॉडल only on data which is stationary, right? And any time series should satisfy three conditions to be stationary. Those conditions I'm going to talk. The time series should have a constant mean. तो ये एक मिनट डायग्राम बनाते हैं यहाँ। थक तो नहीं रहे? जब थक जाओगे तो बोल देना, right? So you have this time series, stock prices on the y-axis and time on the x-axis, and say the time series is this. Does this time series have a constant mean? Guys, इस टाइम सीरीज का No. मीन कांस्टेंट है? Guys, is it constant? Tell me. No No, sir. the mean is increasing with time, na? It is trending. The mean is increasing with time. So this is not a stationary time series because the mean is increasing with time. अब दूसरा टाइम सीरीज बनाते हैं। देखो, एक ये टाइम सीरीज है और again you have stock prices here and time on the x axis. अब ये ऐसा है, now does this have a constant mean? Guys बोलो, इसका constant mean है? Yes, it has. तो ये देखो, इसका मीन सपोज करो ये है, राइट? सो here the time series oscillates around the mean and has a tendency to revert to the mean, and this time series is a good candidate for a stationary time series. समझ रहे हो गाइस? ये रिवर्ट करना है ना मीन पे अपने। ये मीन, ये रेड रेड लाइन है, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन। गाइस, आर वी गुड हियर? हैव वी अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. हम्म, हेलो? ये ज्यादा हो गया, मैं कल करूं? ये समझ में आ रहा है? ऐश्वर्या, समझ में आ रहा है? आ रहे हैं। Yes sir. क्या नाम, पुलकित, समझ में आ रहा है? पुलकित, Yes sir. सेकंड सर ये कंडीशन। मीन रिवर्टिंग, अच्छा अच्छा कुछ हाँ, नहीं, ठीक है। सेकंड है कि नहीं वो मीन टाइम, रिवर्टिंग का कोई फॉर्मूला होता है वो बोल हाँ रहा हूँ। वो भी कर, टाइम सीरीज शुड हैव अ कांस्टेंट वेरिएंस, राइट? तो ये पर्टिकुलर टाइम सीरीज देखो,
this time series is basically revolving around a constant range, right? So it has a constant variance, right? So this again is the second condition that we need to satisfy, right? कि इसका variance एक range के अंदर है, right? Um, basically the time series is revolving around a constant range, right? So the time series should not go beyond a constant range, right? अगर वो if it goes beyond a constant range then it is not a stationary time series. तो अगर वो कोई time series ऐसा हुआ, ये suppose range है, तो ये तो it does not have a constant range ना, it is not revolving around a constant range, it's deviating from this range, so this is non-stationary, right? तो मेरा time series ऐसा होना चाहिए, the time series should revolve around a constant range, it should not go beyond it. समझ में आया guys? Second condition, कोई प्रॉब्लम है guys? No, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं ऐश्वर्य? आ रहा है सर. And third is time series should have a constant covariance. तो ये चीज बहुत ध्यान से समझना. सी कोवेरियंस लिख लो, बुक में बहुत गंदा एक्सप्लेनेशन है. कोवेरियंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिख देता हूं मैं. कोवेरियंस बिटवीन टू पॉइंट्स with the same lag should be equal no matter when you measure it. तो मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि कोवेरियंस बिटवीन xt and xt minus 1 should equal the covariance between xt minus 1 and xt minus 2 should equal the covariance between xt minus 2 and xt minus 3 should equal the covariance between xt minus 10 and xt minus 11. Why? Because they all have the same lag of 1, right? So basically what is covariance? Covariance is basically how two points behave with one another. So how xt behaves with xt minus 1 should equal to how xt minus 1 behaves with xt minus 2 because they have the same lag, right? Guys, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? गाइस ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो सपोज करो चार्ट ऐसा है, कोई टाइम सीरीज है ऐसे ऐसे, तो ये देखो दिस स्प्रेड बिकम्स क्लोजर एट एज टाइम पासेस. यहाँ पे देखो दिस स्प्रेड इज बिकमिंग क्लोजर एज टाइम पासेस, राइट? सो द कोवेरियंस फॉर सिमिलर लैग इज नॉट इक्वल. ये पोर्शन एक अलग टाइम सीरीज लग रहा है एंड ये पोर्शन एक अलग टाइम सीरीज लग रहा है, राइट? दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, राइट? एज टाइम इज पासिंग द स्प्रेड इज बिकमिंग क्लोजर. इसको मैं थोड़ा सही कर, राइट? तो
the spread should be even, right, across time. तो कुछ ऐसा होना चाहिए, right? The spread should be even. अगर spread ऐसे close होते जा रहे हैं ना, तो covariance between points with the same lag is not same. So this is non-stationary. Here spread is even. Spread is even out. ये जो peaks बन रहा है, peak trough, उसमें जो spread है वो same है. So here covariance between 2 points with the same lag is same. This is stationary. तो ये 3 condition meet होना चाहिए, right? You can run a AR model only on stationary data, and this any for any time series should be to be stationary. For any time series to be stationary, these 3 conditions have to be satisfied. First, time series should have a constant mean. Second, it should have a constant variance and a constant covariance. Having a constant covariance basically means covariance between 2 points with the same lag should be equal, right? So covariance is a function of the lag, not the time, right? How 2 points behave with each other is a function of how far apart they are and not where in time they are. Guys, are we good here? Have we understood this? You can run an AR model on stationary data only, on stationary time series, right? For the AR model to be useful, you can run a um, AR model only on a stationary time series. If you run an AR model on a non-stationary time series, the results, the forecast of that AR model would be absolutely useless, right? Guys, समझ में आया? Yes, ये sir. एकदम क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है. Why do we need the data to be stationary? Why does an AR model run a why does an AR model require stationary data? Why does it require a stable mean, variance and covariance? Because we want the forecasted values to have similar properties, right? अच्छा, थोड़ा मैं और बता देता हूँ. So if a data is non-stationary, we can convert it into stationary data. कैसे बताओ? चलो ये देखो. Suppose data ये है 100, 105, 110, 115, 120. तो ये डेटा स्टेशनरी है. गाइस, इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना. इट इज ट्रेंडिंग. गाइस, इज दिस स्टेशनरी? No. No. So this is not stationary because we can clearly see that data is trending. So if it is trending, naturally it does not have a constant mean. So what do we do? Now we create another series from this series. So let's name this series xt. We create a series yt from this series, and yt equals xt minus xt Difference. minus 1. हाँ, Pulkit? वही कह रहा था सर, डिफरेंस ले लेंगे. So what we do is first differencing. We subtract each value from the one before it. So my yt is 5, 5, 5. So now this series is stationary, and we can run an AR model on this. So you run an AR model only on stationary time series, not on non-stationary time series. So for your AR model to be useful, we should, you know,
run it on a time series, or we should use a time series which is stationary and not non-stationary. If we run an AR model of non-stationary data, then that AR model is going to be of no use. ठीक है guys, is it clear अभी तक? कोई प्रॉब्लम है guys, any No, sir. problem?